Hello and welcome back to my channel. Another week, another video. And in this video, I am going to be doing my August favorites. I know August को ख़त्म हुए काफ़ी time हो गया है, मगर कोई बात नहीं. Better late than never. That's what I always say. I have been loving quite a few products. तो शुरू करते हैं इससे पहले कि आप इस लंबी इंट्रो से बोर हो जाएं. तो पहली चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, I think इसके बारे में काफ़ी बात की है, वो है Batiste का ड्राई शैम्पू. नाउ जिन लोगों को ड्राई शैम्पू के बारे में नहीं पता है उनको बताते हुए कि ड्राई शैम्पू जो होता है ना, वो एक तरह का शैम्पू होता है, मगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद अपने बाल धोने नहीं होते. तो कभी कभार कुछ ऐसे दिन होते हैं ना कि आपके बाल जैसे अच्छे लग रहे हैं मगर स्कैल्प थोड़ा सा ऑयली हो गया है, स्कैल्प में थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो आप ड्राई शैम्पू अपने स्कैल्प में करें. जस्ट लाइक दिस, rub it in and your hair will smell fresh, look fresh, और जो ऑयल है वो सारा लाइक जज्ब हो जाएगा इससे. they're gonna smell really good, they're gonna look fresh. मैंने ये प्रोडक्ट लिया था Highfy.pk से. I always talk about this website because they have the best deal. इनसे इतना ऑर्डर किया है कि now they've given me my own discount code which is Anushae 05. तो मैं सारी डिटेल्स लाइक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी क्योंकि Highfy से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं. उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है एट अमेजिंग प्राइसेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड, और बहुत अच्छी प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं. तो मैं उनकी डिटेल्स नीचे लिख दूँगी. अगर आपको कुछ ख़रीदना है Highfy से तो आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज दिस न्यू प्रोडक्ट. PR रिसीव हुआ था लास्ट ईयर और अभी रिसेंटली मैंने अपनी लाइक ड्रॉअर साफ किया तो ये प्रोडक्ट मुझे मिला है. दिस इज द बायो मिरेकल स्किन थेरेपी ऑयल टू फोम क्लेंजर बैम्बू charcoal and aloe vera. I think this is a Korean skincare product. यहाँ पे लिखा हुआ है. This is so good guys. ये literally बिल्कुल इसका जो नाम है ना, ऑयल टू फोम, इट हैज़ एन ऑयली कंसिस्टेंसी. आप इसको अपने फेस पे लगाएं, बस रब करें, आपका सारा मेकअप इतने मज़े से मेल्ट होता है ना. मेकअप उतारने के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है. आई लव इट. आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पे मिलेगा. ऑनेस्टली जब ये ख़त्म होगा तो मैं भी काफ़ी सैड हूँ. नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम Hira Beauty. Now you guys know I promote Hira Beauty a lot. कभी कभार आप लाइक ब्रांडेड प्रमोशन करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लाइक फॉर मी, आई ओनली वर्क विद ब्रांड्स दैट वर्क, that I like, that I genuinely believe in, because ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करके जो कोई काम नहीं करता है कोई फ़ायदा नहीं. एक दफ़ा की सेल हो जाएगी मगर उसके बाद लोग आपको एक लाइक कोस रहे होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल झूठ था और बिल्कुल भी नहीं काम. दिस ब्रांड आई लव देयर फेस ऑयल्स. आई लाइक देयर फेस मास्क नॉट एज मच एज देयर फेस ऑयल्स. आई फील लाइक इनके फेस ऑयल्स थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हैं. This product is a very unique product. This is the Hydra Glow Face Mist with B3 और इसके अंदर जो है वो नियासिनामाइड है. इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन नियासिन, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ. अगर आपकी हाइपरपिगमेंटेशन है, स्कारिंग है, नियासिन इज़ द थिंग दैट आई यूज़. सो दिस इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि नियासिन में मौजूद है. एंड ये एक फेशियल मिस्ट है. सो लाइक यू जस्ट स्प्रे ऑन योर फेस और ये आप रात में मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपने फेस पे स्प्रे कर लें एंड यूर गोना वेक अप विद द मोस्ट ग्लोइंग लुकिंग स्किन. और बहुत ही लाइक हाइड्रेशन ऐड करता है, एक हाइड्रो बूस्ट देता है आपकी स्किन को. एंड आई थिंक इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट. इसमें एलोवेरा भी है, वाइटामिन भी हैं. तो अगर आपकी लाइक स्कारिंग है, एक्ने है, हाइपरपिगमेंटेशन है, बहुत ही जेट. आई हैव अ डिस्काउंट कोड फॉर हिरा अली. आई थिंक अगर आप वो डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाता है उनके सारे प्रोडक्ट्स पे, लाइक their skincare and hair care line. But yeah, this product game changer. I wanted to talk about this foundation. I know मैंने इस foundation के बारे में बहुत बात की है, but I have just been loving this foundation. ये नई पैकेजिंग में आया है Maybelline का Fit Me Foundation. इनके कलर जो है वो शेड नेम्स जो हैं वो चेंज हुए हैं from their previous packaging. And I love foundations in a bottle, like you know pump के साथ जो होता है. I love pumping out foundation because I think सबसे easiest तरीका है फाउंडेशन को इस्तेमाल करने का. सो दिस इज़ द Maybelline Fit Me Foundation. आई बीन यूजिंग दिस फाउंडेशन सिंस एज लॉन्ग एज आई हैव नोन. बहुत अच्छा फाउंडेशन. ओके व्हाट डू यू वांट? टी ये काम हो रहे हैं.
फिल्म करना शुरू। अच्छा ऐसे काम हो रहे हैं। हाय तो बोल दो सबको। नहीं I try to use the most lightweight products on my skin क्योंकि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और रिसेंटली तो नहीं मतलब बट जब मैं 20 साल की हुई थी like 21 years old I got adult acne and it was so bad it left my skin scarred and spots and what not। तो उसके बाद से मैंने कोशिश यही की है कि हमेशा वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो कि बहुत लाइट वेट हैं। मेहमान को ना कमरे से बाहर निकाला हुआ है क्योंकि मुझे वीडियो फिल्म करनी थी और उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही थी इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं काम कर सकते, किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। दिस पैलेट, दिस इज़ द आइडेंटिटी पैलेट एंड दिस इज़ फ्रॉम इंटाइस कॉस्मेटिक्स। मैंने जो आज आई मेकअप किया है, अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, वेल आई यूज दिस आई शैडो पैलेट। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। द पैलेट मैंने ये कलर यूज़ किया है, इट्स कॉल्ड कूल। इट हैज़ लाइक अ शिमर ऑफ ग्रीन एंड लाइक बहुत ही कोई मजे का डिस्को कलर है ये। लाइक इट गिव्स लाइक डिफरेंट शीन जब आप डिफरेंट लाइट में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आई लव दैट एंड दिस पैलेट इज़ ऑल इन ऑल एन अमेजिंग पैलेट। इट्स अ लोकल ब्रांड और इनके आई शेडो की जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। द कलर सिलेक्शन इज़ अमेजिंग। आई लव ऑल द कलर्स इन दिस पैलेट इवन दो आई एम नॉट लाइक अ डार्क कलर फैन, मगर मुझे ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो yeah, love that palette. If you guys want to check it out, you can. Next makeup में we have the NYX Soft Matte Lipcream और ये कलर मैंने अभी लगाया हुआ है। एक दफ़ा मैंने अपनी स्टोरीज़ पे भी ये एक पिक्चर अपलोड की थी where I was wearing this color and so many people asked कि आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है। Well, it was this in Abu Dhabi and whenever I wear this product I get so many compliments कि आपने कौन सा शेड लगाया हुआ है। So this is the shade that I've been using a lot of and I love it. मेकअप चीज़ जो मैं शेयर करूँगी वो है ये मेकअप ब्रशेज़। These are the real techniques के मेकअप ब्रशेज़ and ये मेकअप ब्रशेज़ जो हैं वो बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं है in the YouTube community and the reason why I'm mentioning these brushes is because I absolutely love these brushes. बहुत से सवाल आते हैं कि भाई आप अपने मेकअप ब्रशेज़ कहाँ से लेती हैं। आई यूज़ मेनली दीज एंड द लशेस कॉस्मेटिक ब्रशेज़। ये जो हैं ये हाईफाई से मैंने ऑर्डर किए थे। देर सो सॉफ्ट, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत लंबा चलते हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू शो दीज ब्रशेज़ टू यू गाइज बिकॉज ये मतलब डेली के इस्तेमाल के ब्रशेज़ हैं। या So next thing that I wanted to share with you guys was this perfume. It is the Kenzo World perfume और ये मुझे Scent Station ने भेजा था। I know I mentioned them in my last favorites as well कि उन्होंने मुझे परफ्यूम भेजा था। They sent me this perfume as well. Oh my god, this perfume! It smells so good. Musky, spicy and floral fragrance है ये और बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं है। कुछ फ्रेग्रेंसेस जो मस्की होती हैं वो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग होती हैं बट दिस इज़ द परफेक्ट लाइक इट्स द परफेक्ट बैलेंस। स्पाइस है थोड़ा सा विच आपको आप सूंघते ना बोलते हैं व्हाट्स दैट। सो दिस इज़ द फ्रेग्रेंस, एब्सोल्युटली लव इट, गॉट इट फ्रॉम सेंट स्टेट। ओके नेक्स्ट, सो finally talking about this is the Setosa Laser at home laser set. I have been using this set for 4 to 5 months I want to say now. Setosa की जो ये डिवाइस है ये एक एट होम लेज़र डिवाइस है। आप इसको प्लग करते हैं, ये आपका प्लग है, इसको आप यहाँ पे डालें, प्लग दिस इनटू अ पावर सॉकेट एंड प्रेस दिस बटन। एक ग्रीन लाइट चलेगी, ये डिवाइस ऑन हो जाएगी और इसको आप दबा के रखेंगे तो ये ग्लाइड मोड में हो जाएगा। आप ना सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सट्रीम अपना सेशन चाहिए। लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5 बीइंग द मोस्ट टॉप लेवल, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको। नाउ हाउ डज दिस डिवाइस वर्क? आप अपने हाथ को शेव कर लें, इसको प्लग करें, ऑन करें, ग्लाइड मोड पे करें और जस्ट अपने हाथ पे इस तरह से ग्लाइड करें तो आपके जो लेज़र है इसमें से जो यहाँ से निकलता है वो आपके हेयर फॉलिकल जो आपका होता है उसको डेड करता है। ऑब्वियसली क्योंकि ये एट होम डिवाइस है तो इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने लेज़र कराएं तो उससे डिफरेंट होते हैं एंड मतलब प्राइस में भी ऑब्वियसली फ़र्क है। आई यूज़ दिस एटलीस्ट वंस अ वीक बिकॉज कुछ अपने सेशंस जो हैं वो पहले ही लेज़र क्लिनिक से करवा लिए हैं तो मुझे इतना नीड फील नहीं होती कि आई हैव टू डू इट लाइक ट्वाइस अ वीक। बट अगर आप लेज़र घर पे खुद से कर रहे हैं एंड you've never had laser done, then if you get this device then use it twice a week for a good result for at least
6 to 12 months. इस डिवाइस के अंदर एक आपको बुकलेट मिलेगी, वो आपको बताएगी किस तरह से आप आपके स्टेप्स जो यूज़ किया है, and they're also going to send you this little direction वाली चीज़ जिसको आप पढ़ें if you buy this device, and वो बताएगा वो क्या recommended use है, किस level पे रखना चाहिए है, किस तरह. This is that device. It has been working for me really well and I absolutely love using this. मैं इसको अपने हाथों पे use करती हूँ, on my arms. I use it sometimes on my leg and I sometimes top up my underarms with this device as well, and it has been working really well for me so far. But I would want to say कि इसके रिज़ल्ट्स इंस्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एट होम डिवाइस है. आपको तकरीबन 2 से 3 महीने में रिज़ल्ट्स दिखना शुरू होंगे अगर आप इसको हर रोज़ मतलब हर हफ्ते 2 दफ़ा इस्तेमाल करें. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप एक जगह पे लाइक 3 दफ़ा से ज़्यादा इस डिवाइस को ना करें. व्हेन एवर यू बाय दिस डिवाइस रीड द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे दैन आई एम श्योर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक. दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द डिवाइस. I really like it. It's been working really well for me. I would recommend कि not buy the device instantly. I would say कि आप एक sitting ज़रूर लें एक dermatologist के साथ. Dermatologist तो नहीं, मतलब जो ये laser करते हैं, beauty estheticians होते हैं जो करते हैं I think. And take a sitting, consultation लें, and then 1-2 sittings कराने के बाद top up with this device, and I think you're gonna get really good results. I do have a discount code for this device. I think it's Anushae 10. मैं details description में डाल दूँगी if you want to check it out. Okay. Now I want to talk about a drama series that I have been absolutely loving, and that is Masali. It's eyedenTT. It's a Turkish show and it's so cute. I love it. If you haven't watched it, I would highly recommend that you do. एक ये show बहुत अच्छा है. It's currently airing, and then there's another Turkish series that I watched और मैंने अपने parents को भी दिखाई and they loved it. And this was more of like a thriller, mystery, suspense sort of a drama. Thrill तो नहीं बोलेंगे, suspense. And that was Zemheri. Great show. YouTube पे available है. It only has 10 episodes, so बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. And I love that show. Right. ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी है, मगर we do have one more thing to show you guys. Keep me putting my glasses on because एक बहुत बड़ा सा डब्बा है जो कि मुझे उठा के यहाँ रखना है और आप लोगों को दिखाना है. And I hope आप बोर नहीं हो रहे हैं मेरी बक से. If you guys follow me on Instagram, then you'll know कि एक दिन तस्वीर गिरी और हमारी कैंडल्स जो हम गए. तो मैंने कुछ नई कैंडल्स ऑर्डर की हैं from Hunza कैंडल. I love their candles. Oh my god. I'm so happy कि पाकिस्तान में अब scented candles are like a thing now and they're locally available from local brands. I love that. So this was the candle जो कि मैं अपने favorites में mention करना चाहती थी, मगर sadly this candle broke, तो मैंने नई order की है. This is the Hunza candles Coastal Trees, and my god, it smells so freaking good. Honestly, it smells like a coast. मतलब getting that fragrance correctly, hats off to Hunza candles because damn, this is good. But the rest of the candles मैंने order की हैं, they are all a surprise. I haven't smelled them, so I'm gonna unbox these with you and I'm gonna show you exactly what I bought. I bought a lot. Okay, so पहली जो मेरे हाथ में आई है वो है Honeysuckle and Jasmine. This is what it looks like, and gonna smell it for the first time. Oh my god, that smells so good, guys. Oh my god, it smells so good. This smells like Jasmine, मतलब right off the bat जो रात की रानी की खुशबू है बिल्कुल वो है, और उसमें hints हैं Honeysuckle के, like क्रीमी सी कर देती है. oh god, मुझे लाइक सोच के कुछ हो like that. इस कैंडल जो है वो है फ्लावर बुके. I'm gonna light some of these candles up. Okay, smell test. Oh, this is a bathroom scent. It's so fresh. Flower bouquet. It's literally like a flower bouquet. It smells like a bouquet of flowers. Then we have Bride and Groom. I got this candle क्योंकि इसका नाम बहुत interesting था, Bride and Groom. What do they smell like? I'm guessing something floral. Whoa. Oh my god.
Guys, this is such a unique scent. Smells like a perfume that a man would put, and it smells divine. और एक like बहुत ही like lavendery सा soap जिसको बोलते हैं, like oh wow. And it's very fresh, so I think that's the bergamot. Oh god, this is a beautiful scent. I love this. I think this has been my favorite so far. This might be the last one. Oh god, this one was expensive. तो इनकी ना कैंडल्स 2 jars में आती हैं. एक ceramic jars which are so cute. I wanted to buy more of these ceramic jars, but क्योंकि मैंने इतनी सारी ऑर्डर की थी, so I was like कि jars पे हल्का हाथ रखते हैं, because this jar was less expensive and this jar was more expensive. So this is called Diva. Oh my god. Oh god, this is okay. No, this is my favorite candle. This kind of smells like this perfume actually, but this is such a yummy scent. I cannot wait to burn this. I mean, wow. I would have included this in my favorites. It's an amazing scent. So yeah, that was the mini haul candles ka. I know this video was so long, and I'm sorry about that. Next time I will try to keep these videos short. मगर क्या करें, क्योंकि जब आप रिव्यू दे रहे होते हैं ना लोगों को, तो फिर आप बोलते भी ज़्यादा हैं. But I hope you enjoyed this lovely video, and I love making these kind of videos because I love recommending these things, because I genuinely like all of these things. And if you want me to keep making these videos, make sure to give this a big thumbs up, subscribe to my channel, and I will see you soon in my next video. Description ज़रूर check कर लीजिएगा, मैं links वगैरह मेंशन कर दूंगी कि क्या चीज़ कहाँ से मिल रही है, कोई डिस्काउंट है आप अवेल कर सकते हैं तो कीजिएगा. But yeah, I will see you soon in my next Vlogtember series. Bye.